All right, so today we are going to discuss about the historical background of this novel. As you know that this novel actually covers history more and more, and there are a lot of events. As we have learned so far from your presentations that there are a number of political strifes there in Colombia that culminated into civil wars. So we have the context of civil war. We have another important issues that can help us understand this novel. So I assume that you have studied new historicism in your literary theories subject, if I'm not wrong. Have you studied this new historicism? Not yet, sir. All right. If you want to understand any text in literature, especially novel or drama, you have to study history as an important part of it. So, in order to have the better understanding of the events that are happening in any novel or the characters' behaviors and their relationship between them, and the major themes of the novels can be understood by tracing back its origins in history. So, history becomes very important in the understanding of the novels or any other literary creation or work. So here today we are about to discuss about the origins of Colombian state and what were the affairs, political affairs, social affairs of the Colombia of that time and the important events that are being reflected by Graciela Marcus in the novel. All right. As we know that the Colombians were also being subjected to the colonization by the Spanish in 1530s, and the Spanish colonization of Central America was actually a part of New Granada. And New Granada was a kind of a big colony that actually included other territories of modern day Panama, Ecuador, and Venezuela. As you know that these countries are the Latin American countries. They were being actually colonized by Spanish. Before that, we know that these countries or the area was called Hispaniola. Hispaniola by Christopher Columbus. So when Christopher Columbus he actually discovers the new continent, this paves the way towards more and more conquests from Europeans. So this was the part of that project, and we know that the New Granada was a big colony that included a lot of territories that we see in modern day as Panama, Ecuador, and Venezuela. And it is also believed that the word Colombia, the country Colombia, is actually taken from the name of Christopher Columbus. All right. So the colonization actually started in 5030s. So with the colonization, what one would expect, you already know that there will be a blending of cultures and civilizations. There will be internal strife between the countries and the people, and there will be some of the gross human right violations as well. So there will emerge a lot of problems after this. You already know about the colonization. Uh, this particular subject we actually touched upon in your last semester, in which we were talking about post-colonial literature and all. So now you can assume that the colonization has begun in Colombia, and what to expect now is kind of a little political and social developments to come. All right. And this is also a fact that Spanish, they actually ruled there in Colombia or in Latin America.
the countries which I mentioned already for around 300 years, and they actually produce a kind of a mixed culture, a kind of a blended culture between Spanish, Indian, and African influencers. We already know that there were indigenous people who were Indians in origin in Caribbeans. All right. Then we also know that due to the plantation, sugar plantation, due to the banana plantation, people from Africa were being imported there as a labor. So we have the mixed cultures right now between African, Indian, and Spanish people. So now we have the blending of cultures all over. Blending of cultures means the emergence of new culture and civilization, maybe a new particular political thought and ideology. Then what we saw in Latin American history is that in 1810, Simon Bolivar is considered as the most important leader in Latin American history because he was the one who actually led the mestizo, mixed race population in a struggle for independence from Spain. So as you know that whenever colonial masters they try to enforce their policies on the foreign lands, we have seen in the history that the revolutions takes place. So here Simon Bolivar was one of the leaders in Latin America who actually led this such kind of struggle against Spanish. तो 1810 में जो है सिमन बोलेवार मिस्टिजो यहाँ पे मेंशन्ड है वर्ड, इसका मतलब है मिक्स्ड रेस, स्पेशली लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जब मिक्स्ड रेस होती है वहां पे, जैसे यहाँ पे मेंशन इंडियन अफ्रीकन, तो उसको वर्ड दिया जाता है मिस्टिजो। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रेस, और इस मिक्स्ड रेस को किसने लीड किया? सिमन बोलिवर ने, ताकि जो है स्पेनिश रूल खत्म हो सके। कहाँ से? कोलंबिया से या बाकी लैटिन अमेरिकन जो है वो कंट्रीज हैं। 1810, we are talking about 1810. Yes. Let me check it. मैं नोटिफिकेशन मुझे नहीं रिसीव होता है इसमें सॉफ्टवेयर में, आई डोंट नो। आप प्लीज रिमाइंड मी अगर कोई आ रहा है तो, ठीक है ना? All right. Uh, then we saw that the under the leadership of Simon Bolivar, actually this particular race, Mestizo, they successfully achieved the victory in Boyaca, Colombia in 1819. ओके, तो 1819 में जो है वो कामयाबी मिलती है इस स्ट्रगल को अगेंस्ट द स्पेनिश रूल, और जो है इसके बाद फिर एक बड़ी लार्ज कंट्री बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कोलंबिया। ग्रैंड कोलंबिया जो है एक लैटिन अमेरिका में एक बड़ी कंट्री बनती है जिसमें डिफरेंट टेरिटरीज इंक्लूडेड थी आज की मॉडर्न कंट्रीज में, जिसमें वेनेजुएला भी आ जाता है, इक्वाडोर भी आ जाता है। देन हुआ ये कि जो ग्रैंड कोलंबिया है वो एक्चुअली डिसइंटीग्रेट हो गई और उससे डिफरेंट कंट्रीज बनी, जैसे यहाँ पे नेम्स मेंशन्ड है, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला 1813। अब ये जो टर्न हो रहे हैं, ये जो स्ट्रगल अब आप देख रहे हैं, दैट इज इन द लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स, और इसका एक बड़ा ताल्लुक है 100 years ऑफ सॉलिट्यूड के साथ। ठीक है, अब आई ऑल्सो मैं जो है बार बार रिपीट करता हूँ जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं कि वो क्यों पढ़ते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखें, जब तक ये इवेंट्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझ नहीं आती तब तक जो है वो आप अच्छे से नॉवेल पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ठीक है ना?
तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये भी मकसद नहीं है कि आपने सेपरेट हेडिंग्स में ये सारी चीजें लिखनी है, नो नॉट एट ऑल। एक पर्टिकुलर रेफरेंस आपने देना है अगर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है ना। तो आपका जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऑलराइट, देन व्हाट हैपेंड इन 1886? The remaining territory after the disintegration of Gran Colombia actually was named as Republic of Colombia, and it was in 1886. Now we have a country, separate country, that is the Republic of Colombia in 1886. Then in 1903, there was an area, there was an area that actually ceded, that actually ceded with the help of United States of America. अब क्या हुआ कि 1903 में एक पॉलिटिकल टेरिटरी थी, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसकी हेल्प की, वो थी पनामा। पनामा आपने सुना होगा, बड़ी जो है मशहूर है स्पेशली ट्रेड के हवाले से। वहाँ पे स्ट्रेट्स, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स होते हैं, पनामा कैनाल आपने सुना होगा, ये सारी चीजें ट्रेड के हवाले से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो पनामा को लिबरेट किया 1903 में, ठीक है, बिकॉज यूएस वांटेड टू हैव द कंट्रोल ऑफ द कैनाल ऑफ इस्मस बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। तो पनामा जो है वो भी लिबरेट हुआ 1903 में विद हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो है फॉरेन एक्टर्स की जो इंटरफेरेंस है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो पनामा की जो हेल्प की गई यूनाइटेड स्टेट्स ने की, इसका मकसद ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अब इम्पोर्टेंस ले रहा है इसमें, लैटिन अमेरिकन अफेयर्स में। पहले भी इम्पोर्टेंस थी ज़्यादा, लेकिन ये एक बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें हमें नज़र आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इंटरफेरेंस की, ठीक है। देन वी नो के 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, 19th सेंचुरी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 18 समथिंग, तो उसमें जो पॉलिटिकल इवेंट जो हुए वो बड़े टॉक्सिक थे। और कोलंबिया में दो जो है पार्टीज होती थी मेजर, लिबरल एंड कंजर्वेटिव्स, जिनके बीच में बाद में जब इश्यूज सेटल नहीं होते, पॉलिटिकल इश्यूज सेटल नहीं होते, तो क्राइसिस इमर्ज होते हैं और उससे सिविल वॉर भी लगती है, जो आपके 100 years ऑफ सॉलिट्यूड में विजिबली नजर आती है आपको। और उससे जो मैसेकर होते हैं, बाकी जितने भी इश्यूज होते हैं, वो भी आपको क्लियरली नजर आते हैं इन द नॉवल, ठीक है। देन ये जो these parties corresponded to the followers of President Bolivar and the vice president and later rival Francisco Santander respectively। अच्छा, देन जो है ये पार्टीज जो है इन्होंने फॉलो भी किया प्रेसिडेंट बोलेवार को, जिसका मेंशन किया गया ऑलरेडी, एंड वाइस प्रेसिडेंट को। असल में जो कॉन्फ्लिक्ट था इन पार्टीज के दरमियान, वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो था सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है एक फेडरेशन में या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे क्वेश्चन रेज किया गया कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पास ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव, कंजर्वेटिव्स एडवोकेटेड मोर, लिबरल्स लेस। कंजर्वेटिव्स हमेशा बिलीव करते हैं कि भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में भी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, या लिबरल्स वो सोचते हैं कि वो वीक होनी चाहिए। अब ये जो फ्रैक्शन जो है क्रिएट हो गया, दैट विल कल्मिनेट इनटू मोर डैमेजिंग इम्पैक्ट्स। अब फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा लेथल होंगे कोलंबिया के लिए। ये जो क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फेडरेशन के पावर का,